जिंदगी के कई नाम हैं। जिद है तो जिंदगी है, उम्मीद है तो जिंदगी है, जीत गए तो भी जिंदगी है, हार गए तो भी जिंदगी है। तो आज हम जिंदगी को कोई और नाम नहीं देंगे, बल्कि इसको एक नया आयाम देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं जिंदगी को बेहतर बनाने का सफर। गुड मॉर्निंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, दिस इज अफजल बिफोर यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द राइट वे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से थैंक यू टू ऑल ऑफ यू दैट यू हैव क्लिक्ड ऑन माय वीडियो। इट शोज दैट यू वांट टू डू समथिंग बिग एंड ग्रेट इन योर लाइफ। आपका मेरी वीडियो पे क्लिक करना ये दिखाता है कि आप अपनी ज़िंदगी में कुछ पढ़ा और नया करना चाहते हैं। डोंट वरी, आई विल पेव द पाथ फॉर यू। बीइंग योर elder brother, it is my responsibility to guide your people, and I will guide you. Let's start the session without wasting more time. चलिए शुरू करते हैं ज़िंदगी को बेहतर बनाने का सफ़र अच्छे शब्द और अच्छे वाक्यों से। Today I am going to talk about the power of giving. Yes, my dear brother and sister, power of giving. It is a simple word but magical. And whenever you understand the power of giving, magic will happen in your life. Do you know everyone wants to get respect and help from other people? आप जानते हैं, क्या आप जानते हैं कि हर कोई आदमी ये चाहता है कि दूसरा आदमी उसकी मदद करे, सहायता करे, उसकी रेस्पेक्ट करे, उसकी इज्जत करे। लेकिन यू विल हैव टू गिव फर्स्ट। लेकिन इसके लिए आपको पहले करना पड़ेगा। आपको पहले दूसरों की सहायता करनी पड़ेगी, आपको दूसरों की इज्जत करनी पड़ेगी। तब जाके आप ये चीज़ें दूसरों से प्राप्त कर सकते हैं। यू विल गेट द रेस्पेक्ट एंड हेल्प फ्रॉम अदर पीपल। दिस इज़ द रूल ऑफ द नेचर. You and I can't do anything because we are the small part of the nature, and we have to follow the rules of the nature. And what is the use? Do you know what is the use in your personal life? If you give the best thing what you have to your family, you will get the peace of mind immediately. आपके पास जो भी अच्छी चीज़ें अगर आपने अपनी फैमिली के साथ शेयर करते हो तो आपको पीस ऑफ माइंड मिलता है, मन की शांति मिलती है। दैट इज़ द बिगेस्ट रिवॉर्ड इन दिस वर्ल्ड। और ये दुनिया का सबसे बड़ा रिवॉर्ड है, बिकॉज एवरी वन इज रनिंग टू पोस्ट टू गेट द पीस ऑफ माइंड। लगभग सारी दुनिया इस मन की शांति के लिए इधर उधर भटक रही है, बट यू कैन गेट दिस थिंग एट योर होम। आप ये अपने घर में ही पा सकते हैं बाय द गिविंग द बेस्ट थिंग you have, by the sharing is the caring. If you share the best thing with your family, you will get the peace of mind, and you will get the good relation among your family members. This is the power of giving. So my dear friend, you want to get the best thing from this world, from this nature, you will have to give the best thing to the nature, to this world. Otherwise you cannot get anything from this world. Even our life also based on give and take policy. We cannot breathe in until breathe out. यहाँ तक कि हमारी ज़िंदगी भी गिव एंड टेक पॉलिसी पे आधारित है। हम एक सांस पे अंदर नहीं ले सकते जब तक एक सांस नहीं छोड़े। दिस इज द पावर ऑफ गिविंग. बट नेचर डिमांड्स स्मॉल थिंग्स फ्रॉम योर साइड, बट नेचर गिव्स द बेस्ट थिंग्स व्हाट द नेचर हैव. नेचर आपसे कुछ स्मॉल थिंग मांगती है, छोटी सी चीज़ मांगती है, लेकिन जब नेचर देता है, जब ये नेचर आपको देती है तो वो कहीं ज़्यादा अच्छा होता है और कई गुना बढ़ देती है. आई वॉन्ट टू क्लियर इट विद एन एग्जाम्पल. टेक ए सीड एंड पुट इट इनटू द सॉइल. एक बीज लीजिए और उसको मिट्टी में डाल दीजिए. व्हाट विल हैपन आफ्टर फ्यू मंथ्स और फ्यू ईयर्स? क्या होगा कुछ महीनों के बाद और कुछ अरसे के बाद? It will convert into the tree, and you will get the number of flowers, fruits with seeds, fresh oxygen, and many more things. What did you give? You gave only one seed. And what are you getting? You are getting the number of flowers, fruits, and fresh oxygen, and many more things. And you will get these things multiple times. I think in your whole life you will get all these things. You gave only one times to the nature, and you will get these things multiple times. This is the power of giving. So my dear friend, give the best, receive the best, and nature never cheats you. Nature कभी भी cheat नहीं करता. If you give the best, definitely you will receive the best, and not only once but multiple times. I would like to clear it with one more example. You must have seen the hill area, and you must have gone there. आपने पहाड़ी इलाका देखा होगा और आप वहाँ पे गए भी होंगे. Whenever you stand the pinnacle of the hills and you shout from there, I hate you, nature will reply you, I hate you, not only once
but 3 times, I hate you, I hate you, I hate you. Whenever you shout from there, I don't care you, nature will reply not only once but 3 times, I don't care you, I don't care you, I don't care you. And whenever you shout from there, you are the great, nature will reply, you are the great, not only once but 3 times, you are the great, you are the great, you are the great. So my dear friends, if you want to get receive, if you want to get best thing from the nature, from this world, you will give the best thing to the nature, definitely you will receive the best from the nature sides. It is the power of giving. And what do you know, what is the use of giving in your professional life? I want to conclude my this video within one more example. Do you know everyone want to get success in his life? Do you want to get success in your life? But I have already told you, मैं आपसे पहले कह चुका हूँ कि आपको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा अगर आपको सक्सेस चाहिए तो. And what do you have to give? You have to give your hard work, your perseverance, your dedication. If you are ready to give these things to the nature, definitely you will receive the success. And success will automatically come to you. If you are not ready to give these things, you not deserve the success. अगर आप ये चीज़ें देने को तैयार नहीं है नेचर को, तो आपको सक्सेस नहीं मिलेगी और आप सक्सेस को डिजर्व भी नहीं करते हैं. अगर आप यू आर रेडी टू गिव दिस थिंग टू द नेचर, डेफिनेटली सक्सेस विल कम टू यू ऑटोमेटिकली. So my dear friend, give the best, receive the best. Nature never cheats you. I hope you have understood what I want to say. मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ. If you find this video something, if you find something valuable in this video, please like and subscribe and share so that other person will be benefited from this video. मिलेंगे फिर नई वीडियो में नए विचारों के साथ, अच्छे शब्द और अच्छे वाक्य, ताकि हमारी ज़िंदगी और भी अच्छी और भी बेहतर हो सके. जय हिंद.